Hello students, welcome to the fresh class. How are you all? Hope you are good. Okay, fine. Today we are going to read the rest part of the three question. Okay, let us. Before going to the last unit or the third unit, let us summarize the first unit and second unit. Okay, let us discuss. So in the first unit, what happened? The king occurred three questions and he want to know the answer of the three questions. What is that three question? The first question is what is the right time? Second question is who is the right person? And the third question is what is the right work or the right occupation? Okay. Then what happened? The king spread all over his kingdom that the person who will answer me of these three questions, I will give him a great reward. And different kind of wise people came to the king and they answered the question in a different way. After that, the king did not agree with anyone and give the reward to none. But he has a wish to get the answer. And somehow he came to know that there was a hermit. Maybe he will answer me. And this is your first unit. And in the second unit, what happens? He went to the hermit. The hermit was a frail and weak person who was digging his soil. And when the king asked the question that the wise man, I want to know my three questions, the answer of three questions. So what was my question? That what is the right time, who is the right person, and what is the right occupation. These three questions answer I want from you. And then the hermit replied nothing. କିଛି ବି ସେ ତାଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଫେରଉନାହାନ୍ତି. And then after some time, the hermit spread the spade towards the king. ଯାଇ କୋଦାଳରେ ନିଅ ଆଉ ମାଟି ଖୋଳ. So the king thought that maybe the hermit is tired, so that he dug the soil. ମାଟି ଟିକେ ସମୟ ଖୋଳିଦେଲେ. But after some time, he asked the question again. Again the hermit did say nothing. କୌଣସି question ର ଉତ୍ତର ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେ ଦଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କୁ. Now the king is a little bit angry. ଟିକେ ରାଗି ଯାଇଛନ୍ତି. And he is asking to the hermit, oh wise man, if you can't tell me the answer of these three questions, tell me so I will return back to my home, go back to my home. ମୁଁ ପଳାଇ ଯିବି. In the meantime, a bearded man came running, who is pressing his hand in the stomach, and under the hand, the blood is flowing. And who came to the king and fainted on the ground. After reaching to the king, he fainted on the ground. Se senseless ho jauchi seiti. And now the hermit, the king, with the help of the hermit, he is making on cloth to the person, and he cleaned the wounded area. After that, he bandaged that area with the help of a handkerchief and a towel. Okay, but the blood did not cease. After some time, when the blood ceased, the bearded man revived again, and he is asking for drinking something. So the king bring him a fresh glass of water. After that, he asleep. So in the meantime, the sun had already set. এই সময় ভিতরে সূর্যাস্ত হয়ে যাইছি. সো ସେମାନେ କ'ଣ କଲେ, ସେ ଲୋକଟିକୁ କୁଡ଼ିଆ ଭିତରକୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ସେଇଠି ତାକୁ ଶୁଏଇଦେଲେ. ଆଚ୍ଛା, then what happened? And now it is evening time, so the king will not return. So the king also very tired by his walking and by his hard work, so he also slept in the doorstep. Se kabat ku derehiki semti se soi jaichandi. So when in the morning the king wake up, ଯେତେବେଳେ ସେ ଉଠୁଛନ୍ତି, the bearded man is gazing at the face of king. ସେ ଅନେଇକି ସେମିତି ରହିଛି. So the king is asking, who are you? And in the meantime also the bearded man is asking for forgiveness. ତାକୁ କ୍ଷମା କରିଦେବା ପାଇଁ କହୁଛନ୍ତି. ତ ଏଇ ରଜା ଏଇଠି ପଚାରୁଛନ୍ତି, who are you?
I don't know you, so why are you begging forgiveness? कौन पाई मते क्षमा मागुଛ तमे? So the bearded man is saying that you don't know me, but I know you. मु आपन को जाने छी because I am one of your enemy. मु आपन को जने शत्रु जी कि आज आपन को मारिबा पाई एठी के आसीथिली. When you did not come back and the day left, but you did not come back at that time, I came out from my ambush. मु लुचि थिबा जगह बाहरी आसिली and caught in the hand of your soldiers or bodyguards. आपण को बॉडीगार्ड मते धरी पकेले मु धरा पड़ी गली और से मते क्षत विक्षत करदेले हुए तो मु मरी जाई थांती जति आपण मोर बेंडेज न करि थांते. सो मु आसीथिले आपण को मारी देबा पई बट यू सेव्ड माय लाइफ किंतु आपण मो जीवन बंचै देले. सो फ्रॉम नाउ आई एम वन ऑफ योर फेथफुल स्लाव इफ यू परमिट मी. जदि आपण मते परमिशन देबे मु आपण गोटे फेथफुल स्लाव हे की रहिबी. सो आफ्टर दैट द किंग वाज वेरी ग्लैड नाउ. बहुत खुशी हे जाइचंती and he not only forgive to the stranger person or the bearded man but sent some of his servant and physician to his house and restored and promised to restore all his property. So this is your second unit. Okay, fine. Let us move to the third unit. रजा आसीथिले कोन पई हर्मिट को पाकू तांकर तीनोटी प्रश्नर उत्तर पाइया पई. वर्तमान या भीतर जने बियर्डेड मेन आसी गलेनी तांको सेवा शुश्रूषारे समय पळेलानी. सो या तांको प्रश्नर उत्तर पाई नाहंती. देखिबा थर्ड यूनिट रे से उत्तर पाउचंती ना नाही. चलो हैविंग टेकन लीव ऑफ द ओंडेड मेन वर्तमान ता पाखरु टिके लीव नै के आसिले. The king went out into the porch and looked around for the hermit. वर्तमान से बाहर को बाहरी आसिले आ देखु जंती कोठी ये हर्मिट कुआडे गले अछंती ना नाहंती. बिफोर गोइंग अवे ही विश्ड वंस मोर टू बेग एन आंसर. कहले पळै तो जीबी ठीक अछि ता पूर्वरु आ थरटे पचार देबी शेष चांस जदी हला हला न हला नाही. एग्जाम रे हमको जो क्वेश्चन न आसे मल्टीपल चॉइस जोटा हले गोटे मारी दबा हले बाजले पे मार्क मिलेला न मारले नाही सेमती. सो ये राजा वर्तमान कोन करले जे पचार देबी आ थरटे लास्ट टाइम आई विल आस्क हिम if I will get answer that's fine, if not okay. Then what happened? Before going away he wished once more to beg an answer to the question he had put. The hermit was outside. वर्तमान से हर्मिट जनक बाहर अछंती on his knees अंठुरे माडी पड़ी के बसी जंती sowing seeds in the beds that had begun dug the day before. रजा को लगे की माटी खोला करे दी जंती वर्तमान सेठी सब मंजी बुनिया पई बसी जंती अंठु माडी की कोठी से माटी ऊपर. The king approached. रजा जाई की वर्तमान पचार जंती and said कहउचंती for the last time I pray you. last time पई पचारु जी आपन को to answer my question wise man. जदी पारिबे वो प्रश्न उत्तर दियंतु नाले मु फेरी जीवी. You have already answered. हर्मिट कहउचंती तुमको तो आंसर मु देई देईची केते बेले देले कि रे देईचंती आमे तो कहीं सुनिया को पाइनु. चलो देखिबा हर्मिट कहउचंती माने सत हेतिबो निहाती कोन कहउचंती से देखो. You have already answered. तुमको आंसर देई देईची. So said the hermit, still crouching on his thin legs and looking up at the king, he stood before him. अंठ माडी की बसचंदी ना रजा को अनै चंदी मु तो तुमको आंसर देई देईची ताको कहउचंदी हला. ओके यू हैव हाउ आंसर. वर्तमान रजा कहउचंदी केते बेला आपण मते उत्तर देले हाउ आंसर व्हाट डू यू मीन सेड द किंग. रजा कहउचंदी आपण कोन कहिया को चाहुचंदी आपण तो मते उत्तर देई नाहंती मु कालीठु आज पर्यंत आपण को पचारुची मोर तीनोटी प्रश्नर उत्तर दियंतु आपण तो मते देई नाहंती एंड यू आर सेइंग दैट यू हैव ऑलरेडी बीन आंसर्ड हाउ. Okay, fine. Do not you see? Hermit कहउचन तमे देखिलनी. Replied the hermit, if you had not pitied on my weakness yesterday, मोर जो दुर्बलता उपरे तमर जदी टिके दया आसी न थांता काली and had not dug those beds for me आ मो पई जदी टिके तमे माटी खोली देई न थांतो but you had gone your way तमर रास्ता रे तम पळै जाई थांतो मु तो उत्तर देलिनी तमगु तमे मो पाए मो ऊपर दया देखै कि जदी माटी टिके खोली न थांतो आ तम रास्ता रे पळै जाई थांतो दैट मैन वुड हैव अटैक्ड यू. जो लोकटी लुचि की बसथिला तुमको मारिया पई तुमको मारी दै थांता
then kon heitanta, and you have repented of not having stayed with me, ଆଉ ସେତେବେଳେ ତମେ ରିଏଲାଇଜ କରିଥାନ୍ତ, ଅନୁତାପ କରିଥାନ୍ତ ଯେ ମୁଁ କାହିଁକି ସେ ଋଷିଙ୍କ ସହିତ ରହିଲିନି, ପଳେଇ ଆସିଲି ଆଉ ବାଟରେ ମଲି। So the most important time, first question, the most important time kon? So the most important time was when you are digging the pits, and I was the most important man, and to do me good was the most important business. तो तांको तीनोटी प्रश्नर उत्तर एठी से दे देले जे तम तीनोटी प्रश्नर उत्तर होउची जदि से समय तमर मो ऊपर दया आसी न थांता तमे तम रास्ता रे पळै जाई थांतो, बाटरे मरि थांतो। तो एठी से कंक्लूजन कहउचंती, तो जो समय रे तमे मो सहित थिलो दैट टाइम वाज इंपोर्टेंट। से समय रे तमे मो सहित थिलो, आई वाज द इंपोर्टेंट पर्सन फॉर यू। आ तमे मो पई किछि भलो चिंता कलो, मो पई भलो चिंता करी मो पई माटी खोली देलो, दैट इज द इंपोर्टेंट वर्क। So that means what he wants to say actually, now is important. The time, the person who is with you, and the work what you are doing, that is important. मने करो तुम मैंने क्लास रे अच्छो, say class time, say 45 minutes, that is important for you. The teacher who is teaching you, that is your important person. And the work you are doing, that means you are learning, तमे पढुचो तांकोठु, that is important work for you. So he wants to say that now is important, present is important. So always give importance to present, nothing else. आमे जो समय रे अछु, जहा सहित अछु, जहा करूचु, that is important. Okay, now let us move forward. And then afterwards, क्वेश्चन से समय पे सेटा थिला, तापरे कोन हैला आफ्टरवर्ड्स, व्हेन दैट मैन ran to us, जते बेले से लोकटी दौड़ी दौड़ी तम पाखु आसिला, द मोस्ट इंपोर्टेंट टाइम वाज व्हेन यू वर अटेंडिंग टू हिम। तम पई मुख्य थिला, तम पई इंपोर्टेंट थिला जते बेले तमे से लोकर सेवा करूथुलो, दैट टाइम वाज इंपोर्टेंट फॉर यू। एंड फॉर इफ यू हैड नॉट बाउंड हिज ओन्स, he would have died without having made peace with you। जदि तमे तार से बेंडेजटी न करि थांता, लोकटी मरि जाई थांता, किंतु को प्रकार मरि थांता, तम प्रति घृणा भाव रखी कि, तम प्रति शत्रुता भाव रखी कि से मरि थांता, तम संपर्क भलो ही न थांता। तो सी जदि मरि जाई थांता, काले सकाळे कोन ही थांता, ता पुओ आपन को मार थांता, तापरे आपन को पुओ ताकू मारि थांता, एई शत्रुता कंटिन्यू करी रही थांता। ये जो शत्रुताटा एनिमिटीटा फ्रेंडशिप रे परिणत हला, एटा आउ केबे हेई न थांता। सो एट दैट टाइम दैट पर्सन वाज इंपोर्टेंट फॉर यू, दैट टाइम वाज इंपोर्टेंट फॉर यू, आ तमे ता पई जेउटा करलो दैट वर्क इज इंपोर्टेंट फॉर यू। से समय रे से तीनोटी जिंस आपन को पई इंपोर्टेंट थिला, जहा द्वारा आपन तार रिजल्ट कोन पाइले, दैट मैन बिकेम ए फेथफुल स्लेव ऑफ यू, दैट मैन बिकेम ए फ्रेंड ऑफ यू, the enemy of yours became a friend of yours. So always give importance to present now. Then what happened? So he remember. So tenu there is only one time, gotiye time achi kono, that is important now. So the most important time is now. Always give importance to now. And then it is the most important time because it is the only time when we have any power. केवल प्रेजेंट रे किछि गोटे पावर थाए, गोटे मंत्री जो पर्यंत तार सीट अच्छी बा जो समय रे से पावर रे अच्छी, he is almighty, his position is almighty position, he is in high position, से समय रे ताको लोक सम्मान दियंती। जो मुहूर्त रे आज तार मंत्री पद गला, काली ता पाखरे से पावर नहीं। गोटे टीचर जे पर्यंत तम क्लास रे पढौचंती, ताको हाथ रे से पावर अछि, द क्लास इज हिज प्रॉपर्टी, से पर्यंत से तुमको पढ़ाई पारिबे, तुम ऊपर अधिकार साब्यस्त करि पारिबे। बट जते बेले तांकर 45 मिनिट सरी जाउची, दैट टीचर डोंट हैव एनी पावर ऑन यू, एंड यू आल्सो डोंट हैव एनी पावर ऑन देम।
तमर मध्य नहीं जे पर्यंत टीचर क्लास रे अछंती से पर्यंत तमे तांको प्रश्न पचारि परिबो उत्तर पचारि परिबो ताको पाठ सुनि परिबो व्हाटएवर सो प्रेजेंट रे सब बेले पावर थाए not past not future matters okay fine then what happened so the most necessary man is he with whom you are important person किए तमे जहा सहित जो समय रे अछ से भिकारीटे हो पारे से जड़े बड़ ऑफिसरटे हो पारे तुम बापा हो पारती माँ हो पारती सांग हो पारे टीचर हो पारे सान भाई हो पारे whoever may be it doesn't matter but who is with you that is important person for you okay fine and then and most important affair our last question कौन थिला तांकर what is the right work so what is the right work actually to do him good because for that purpose alone man sent to this life our important कामटी हम कौन जो समय रे आमे अछु जहा सहित आमे अछु ता पई किछि भलो करिबा इटा होची important work because only for that purpose man is here in this earth मनीष कौन पई ए समाज रे अछि ए पृथ्वी धरा पृष्ठ रे अछि रे हमें किछि भलो काम करिया पई तो आमे जो समय रे अछु जहा सहित अछु ता पई किछि भलो करिबा that is the important work nothing else मु जदि भाबुची जे मु आज पाठ पढुची मु बापा मां को पई कोन करि परिबी मु बड़ हेले मु भलो चाकरी करले बापा मां को भलो रखिबी तांको पई सब किछि भलो करिबी नो that is not the proper way I don't know we don't know about our future because future is uncertain मु जो समय रे अछि एबे मु बापा मां को सहित अछि ना जहा पारिबी तांको पई करबी मां जदि तुमको दुकान को पठाउछन जा दुकान को तांको टिके पई सौदा नै आसो बापा को जदि ऑफिस रे छाडिया को पडुची टिके करि दियो सान भूणी के जदि कॉलेज रे छाडिया को पडुची स्कूल रे छाडिया को पडुची करि दियो आमी जहा सहित अछु जहा पारिबु प्रेजेंट रे ता करिबु that is important work okay so ई प्रश्न रो उत्तर टी जदि हर्मिट तांको डायरेक्ट दे दे थांते रजा तो पळे जाई थांते ना काहे कि से एक प्रकार काम करेले तांको वेट करेले तांको रगेइले ता परे तांको उत्तर देले sometimes it is important to experience जदि सेई कथाटा से तांको खाली कहि देई थांते हुए तो अलगा जो माने जेमिति तांको उत्तर देले सेई भले से भाबी थांते से रियलाइज करि पार न थांते जे यस प्रेजेंट इज इंपोर्टेंट नाउ इज इंपोर्टेंट तो तांको एक्सपीरियंस करैबा पई से निजे फील करंतु जे यस प्रेजेंट इज इंपोर्टेंट प्रेजेंट हैज पावर निश्चित भाबरे प्रेजेंट रो किछि पावर अछि तांको एटा रियलाइज करिया को चाहुतिले के हर्मिट सो प्रत्येकटी मनीष हम जीवन रे जे भी आसंती ना जदि से हम पई किछि करूचंती डेफिनेटली देयर इज ए पर्पस मे बी गुड मे बी बैड but purpose is definitely there so it is a separate thing so our morality is always give importance to present because present has a power present रे निश्चित भाबर गोटे पावर अछि so here I will say you give importance to your study because that is your present इटा ही तमर वर्तमान पाठ पढ़िबा but tome jo purpose re acha today you are watching this video why because you have a purpose to learn the topic e topic ta tomar janibar ichha achi sethi pai tome je video ti dekhucha otherwise not so that means you are giving importance to your study this is the right work so always give importance to your study because it is your present fine so this is your total prose 3 question I think you understood if not watch it again and again and comment on me what is your problem okay thank you have a nice day